हेलो डियर फ्रेंड्स, संडे एकेडमी को आपको स्वागत। आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी रो जो एनटीपीसी एग्जाम हम ता ट्रेडिशनल जीके देखिबा इकोनॉमिक्स पार्ट 7 कोन अछि आज देखिबा। चलो स्टार्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 1 कोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स डू नॉट बिकम हैबिट्स, वांट्स आर स्टेबल, वांट्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव। कौन आंसर मिला माने आंसर आपनकर सी, वांट्स आर स्टेबल। Human wants are unlimited. There are no limit to man want. So any particular want is stable. Okay. What are the two variables whose relationship is given by the environmental Kanjal's curve? Environmental regression and tax revenue, environmental regression and per capita income, inequality and tax revenue, inequality in per capita income. Answer upon B, environmental regression and per capita income. Question number 3. According to the 2011 census of India, which of the following is the second most populous state in the country? Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Rajasthan. So आपनकर B, Maharashtra. Okay, Maharashtra is the second most populous state in the country as per the census of India 2011. Uttar Pradesh is the most populous state in the Sikkim state, and Sikkim is the least populous state in India. Okay, question number 4. Which of the following state of India has the maximum number of inhabited village as per census 2011? Odisha, Bihar, Madhya Pradesh, or West Bengal. Answer B, Bihar. Okay. Bihar has the maximum number of inhabited village as per 2011. It is the third largest state by population and 12th largest by territory, which an area 94,160 kilometers square. Okay. Question number 5. Which economic thought talks about the methodological individualism and the idea that people will act in many equal ways which can be analyzed? Washington Consensus, Keynesian theory, monetarist, Artesian economic thought. Answer problem D, Artesian economic thought. Okay. Question number 6. Of which of the abbreviation, which one is primarily an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India? NPCI, NABARD, SIDBI or IRDI? answer? A. NPCI. NPCI stand for National Payment Corporation of India. It's an umbrella organization that operates retail payment and settlement system in India. Okay. Question number 7. An asset that has remained in the substandard category for a period of 12 months is classified as a dash asset by a bank. Liquid, non-performing, doubtful or loss. Answer आपन C, doubtful. Okay, since ये लिखा है explanation में. Question number 8. Which of the following countries is not a member of the World Trade Organization? Israel, Iran, Guinea or Norway? Answer आपनकर B, Iran. Okay. Question number 9. Which organization publishes a human development report? एटा बहुत प्रकार पड़छि, निश्चित एथरा गोटे एनटीपीसी रे पढिबा थयो. WTO, ILO, World Bank, UNDP. Answer आपनकर हो D, UNDP. कोन कहछि? The Human Development Report HDR is an annual human development index report published by the Human Development Report Office of the United Nations Development Program, जोटा कि UNDP होछ. Okay. Question number 10. With reference to the United Nations Sustainable Development Goal, which of the following is the SDG 10? Climate action, reduction in inequality, zero hunger, decent work and economic growth. एटा देखो मन रखो SDG जते सब पोस्ट परीक्षा पढुची ए क्वेश्चन पढी चलिबा परीक्षा. Okay, answer of आपनकर B, reduce inequality. Okay, से सेम जिनिस लिखा है reduce inequality within among the countries. Okay, એટલે মানে ये होचे हमर संडे एकेडमी आपन पाखरे गोटे दिया है कोन एटा होचे गोटे क्यूआर कोड. ओके, क्यूआर कोड आपन कोन करिवे ना स्कैन करिवे. स्कैन करला आपन टेलीग्राम चैनल रे पहुंचबे. चैनल रे कोन मिलिबा आपन को गोटे भलो जिंस मिलिबा ना आपन को वीडियो जत्ते बेले आसुची हमर चैनल रो
संगे संगे आप अपडेट पाइबे। ओके नेक्स्ट काम कौन मिल आपण ये पीपीटी आम पढ़ाऊँ तार आप पीडीएफ मिल पीडीएफ आप काम कौन कौन ना आपण मैंने जो परीक्षा पाखे आसो ये पीडीएफ गुड़ा खाली स्क्रोल कर चलिए आंसर भी आप एक्सप्लेनेशन दिखाई आंसर जानले आप बेनिफिट कौन परीक्षा ट्रैक कर क्वेश्चन आंसर कौन था आउ जो आम पढ़ाऊँ व्हाटएवर डिटो क्वेश्चन पढ़े डाटा किसी बाहर पड़ोन कहीं आम एक्सपीरियंस रिलेटेड जितने क्वेश्चन आनी सेम टू सेम परीक्षा पढ़ी आसी पड़ो मत ओके तापरे सेकंड अनाउंसमेंट है आशा ओपीसीएस बैच पीसीएस आसो सब जानते बेनिफिट कौन मिल बेनिफिट होची गोटे ऑफलाइन बैच ऑफलाइन आप बहुत बेनिफिट अच्छी बेनिफिट कौन अच्छी सिलेबस आप कवर हवा जस्ट 9999 ओके सेकंड कौन ना 6 मंथ वैलिड रहिबो आपन को इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग रहबो आपन को मेटल सप्लाई मिलबो आपन ए टू जेड डाउट क्लियरिंग से तो ए सब जिंस मिलबो आ बैच भी स्टार्ट होची 5 एप्रिल तणो आपन को ए आसला को मे बी एप्रिल मे आड होई जिवो ओके तेणु आपड़ जो एवं स्टार्ट करेंगे ओबियसली आप कोर्स कंप्लीट करदे सेकंड कर्मवीर आरआरबी ग्रुप डी 2025 बैच अच्छी जो कौन आप फाउंडेशन बैच रहा जो ग्रुप डी अच्छी एग्जाम से बेनिफिट कौन मिले कंप्लीट सिलेबस मिले 4999 6 मंथ वैलिड रहा गोटे भल करना एनटीपीसी तो एग्जाम लेट हम आप जानी आपंकर कौन आपंकर मिनिस्टर लेवल एग्जाम हम तापर आपंकर टाइम लगे हाँपाई तेणु आ गए कौन कोर्ट केस चलती ओबियसली आप टाइम बहुत अच्छी तेणु ग्रुप डी जॉइन कर जातु बेटर कौन ना आपंकर भल कर डेलीवर जेकोसी एग्जाम आगे अलरेडी गोटे एएलपी भी नोटिफिकेशन आसलानी अलरेडी शेड्यूल अच्छी तेणु ओबियसली एबे ग्रुप डी तो निश्चित भाव आप ट्रैक करेंगे तेणु से प्लानिंग कर चलतु आउ जन्म हम अपकमिंग ग्रुप डी भी आसो ठीक अच्छे लाइब्रेरी अवेलेबल अच्छी 499 मात्र एत कम फी रे प्राय भुवनेश्वर मिले तेणु आप लाइब्रेरी अच्छी आपर जो डाटा चाहिए विजिट करूँ आउ कॉल जदि आप कॉल कर एडमिशन करेंगे किसी असुविधा नहीं ओके चलो क्वेश्चन जावा Which of the following ministries implemented the midday meal scheme? Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Social Welfare. आपन आंसर अब सी Ministry of Human Resource Development. Okay, कौन देखिए Ministry of Human Resource Development, Ministry is implement the midday meal scheme. Okay, question number 12. In whose guidance the Economic Survey of India is prepared? Finance Commission, Finance Minister, RBI Governor, Chief Economic Advisor. Answer about the Chief Economic Advisor. The Economic Survey of India is an annual document of the Ministry of Finance, Government of India. The Department of Economic Affairs, Ministry of the Finance presents the survey in the Parliament every year just before the Union Budget. It is prepared under the guidance of the Chief Economic Advisor of India. Okay. Question number 13. For how many mandated crops minimum support prices MSP is announced by the government? 22, 42, 32, or 12. Answer A. 22. Okay. The Indian government announced a minimum support price MSP for 22 mandated crops and PRN remuneration price FRP for sugarcane. Question number 14. The period of second 5-year plan in India was 1961 to 66, 69 to 74, 56 to 61, 51 to 56. कौन होगा आंसर C 56 to 61. Okay. सही से नहीं लिखा है एक्सप्लेनेशन ओके चलो तो Question number 15. Which aspect of the financial system do the Basel norms focus on? Share market, insurance, banking or commodity market? Answer हम C banking. Banking आप लोग Basel norm पढ़ी में आप लोग पढ़ी में नहीं सही से नहीं लिखा है ची explanation ओके अब ऐसे ला what is the full form should be अपना करो full form अपना रेडी पढ़ी देवे है ना आंसर टा मुझे कह देवे 11 टाइम अप हेगला आंसर आपनकर डी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सनस अकाउंट टू अनदर पर्सन इन हुज नेम इट हैज बीन इश्यूड टू नोन एज कैश चेक पासबुक और करेंसी आंसर आपनकर चेक कोन पे ना चेक बुक रे अपन कान लेखिला अपन तक पैसा मिल जाए ला कैश बेला काकू ना लिखिछन केबे होबनी पासबुक तो आपण ना लिखि केबे केबे देई परिबेनी करेंसी देई परिबेनी केवल चेक देई परिबे ओके आंसर आपण बी सही सेंटेंस एटा को एक्सप्लेनेशन लिखा है ओके पढ़े देबे
Question number 18. Atal Thinking Labs is an initiative by the which of the following institution? National Ayush Mission na helaguni. Central Board of Secondary Education CBSE कौन करना? How many? Reserve Bank of India हाँ से भी लागुनी. नित्य आयोग हाँ D answer अब अपना का नित्य आयोग. Okay answer D. Okay okay सही सेम आंसर लगा जी मुझे टाइम कहली एलिमिनेशन में आंसर देंगे. Question 19. Who maintains a buffer stock of food grains in India? NAPED FICCI तापरे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर FCI आंसर आपन डी FCI. ओके इन इंडिया द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेटा फुल फॉर्म थिला FCI ए गवर्नमेंट बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनिंग द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स. ओके लास्ट क्वेश्चन फॉर व्हिच क्रॉप फेयर एंड remunerative price is announced instead of minimum support price rice sugarcane pulses or wheat. Just a recently एगार 12 नंबर क्वेश्चन कहिथिले कोन हम सुगर कहिथिले आंसर आपण आंसर सुगर केन. ओके सेही सेम जिंस पुनी सेम टे लिखा हिची. ओके पिला माने ये होछ हम सन्ने एकेडमी आ एठी जो आपण गोटे क्यूआर कोड देखछन देखन एटा गोटे क्यूआर कोड. ओके क्यूआर कोड आपण जेटा स्कैन करिवे आपण बेनिफिट कोन गोटे ग्रुप रे एंट्री करिवे एंट्री कर आपण को जो डेली क्लास हमर होची सेटा आपण को सेठी आपण को नोटिफिकेशन आजिबा. सेकंड कोन एई जो पीपीटी हम पढोछु तार पीडीएफ हम हम सेठी दबो देले आपण बेनिफिट कोन मिलबो ना पीडीएफ टा पाइले जेटा एग्जाम पाखे आसीबा आपण खाली पीडीएफ स्क्रॉल डाउन करजिबे पूरा देखिबे डिटो क्वेश्चन पढिदिबो एग्जाम रे डिटो क्वेश्चन आपण छापी के आसीबे बहुत किछि बड़ क्वेश्चन पढेनी एंटी सब क्वेश्चन पढे पिला माने आशा ओपीएससी ए सब आज को माने ए सरी चाकरी कर सेक्रेटरी चाकरी भुवनेश्वर बुझ परछ ना भुवनेश्वर काकू छाडिया इच्छा भल जिनस हेल्थ फैसिलिटी भल जिनस आपण एजुकेशन भल मिलबा भल जिनस मौज जेटिक अछि बुलाबुली करिवे एन्जॉय करिवे लाइफ सहित आउ क्वार्टर मिलबो तेनु बेस्ट चाकरी कोन ऑफिस एसो आउ एडा उटा हम पकरे ऑफलाइन कोर्सेस भी आछे. ऑफलाइन आपण जिबे आराम से पाठ पढिबे आपण को गाइडेंस मिलबो टीचर पाखे बस डाउट क्लियरिंग करिवे एमिति फैसिलिटी मिलेनी ऑनलाइन रे ऑफलाइन मिले तेनु कंप्लीट सिलेबस 6 मंथ में कवर हो जिवो आपण इंग्लिश हो ओडिया मैथ रीजनिंग जहाँ दरकार आपको मिले. सेकंड कथा कौन 6 मंथ वैलिडिटी भीतर आपन को प्राइस केते 9999 भुवनेश्वर सब विश्वविद्यालय बहुत अधिक रेट किंतु ये सब कम फर्स्ट अप्रैल बेस्ट स्टार्ट होछ. ता सहित जो माने टिक सेंट्रल रे चाकरी करे सेंट्रल चाकरी समान कर पई आरआरबी ग्रुप डी कर्म मिले बैच अछि सेटर आपन कोन कोन ऑफलाइन बैच ऑफलाइन सेठी कोन अछि कंप्लीट सिलेबस 6 मंथ कवर हो 4999 आपन कोर्स फी आपन टिक भाबंतु एनटीपीसी चाकरी अछि आपनकर ग्रुप डी चाकरी अछि एबे एलपी भी आसीबे बोली ऑलरेडी अनाउंसमेंट है सालानी तेणु कहीं की रेलवे चाकरी न करिवे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टिकल का ना ठीक अछि बुझ पाइले बैच स्टार्ट होछि एक पहले जल्दी जल्दी कोर्स एनरोल कर दे ठीक अछि. सेकंड लाइब्रेरी अवेलेबल अछि मात्र 499 विश्वास करबे नै एते सस्ता रे भुवनेश्वर सस्ता मिलु ही नै मु खोजी सारणी सब 50 499 मिलु तेणु आपण कोन करिवे ना एठी जो एड्रेस अछि 8N4 185 आईआर सिविल नापली जाके टिके विजिट करने में आ आपण को लाइब्रेरी रे आपण सीटा बाबा छै टिके लिख देबे ठीक अछि. एटा कोर्स विषय भाबिबे कोटा भल रहइबो हला. क्वेश्चन नंबर 2 बुझिबा हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ऑन 17 डिसेंबर 1931 पीसी बहालनविस आरए फिशर एफ वाइटेस एमएच असर पिला माने ये आंसर निश्चित खोजी खोजी आपण माने जुड पाइबे आंसर टेक कमेंट सेक्शन में लिखि देबे बेनिफिट कोन मिलबो आपण जे आंसर ठीक थियो निश्चित हम गोटे हार्ट स्माइल देबो ना पिला माने परसबल लेक्चर गोटे हार्ट स्माइल देबा ना पिला माने ठीक होछन जदि मन को आंसर आपण आसुनी निश्चित भाबरे गोटे सप्ताह भीतर हम आंसर टेक कमेंट सेक्शन में आपण माने देख परिबे. पिला माने आ कोन जे इंप्रूवमेंट दरकार अछि जणाइबे लाइक कमेंट लाइक वीडियो टिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे भूलिबेनी. ओके थैंक यू सो मच.